everyone, so welcome back to my channel Ritika this side, and today I'm gonna take you with me through North and South Goa, and this video will give you a brief idea about which places to visit in North and South Goa. तो सुबह को 5 बजे मैं निकल गई थी मेरी कैंपस से टुवर्ड्स मैसूरू स्टेशन। पहली बात तो ये है कि मैसूरू जंक्शन से यू विल नॉट गेट डायरेक्ट ट्रेन टू गोवा, सो आई हैड टू ट्रैवल टू बैंगलोर थ्रू मालगुडी एक्सप्रेस, और वहाँ से मेरे को मडगांव जंक्शन पे जाने के लिए आई हैड माई ट्रेन फ्रॉम बैंगलोर इटसेल्फ। If you want a comfortable yet affordable journey to Madgaon Junction, then AC3 टायर इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज ये जो वास्को डा गामा एक्सप्रेस है ना, ये बहुत क्लीन रहता है। एंड इफ़ यू आर अ स्टूडेंट लाइक मी एंड यू वांट टू ट्रैवल, देन AC3 टायर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बैंगलोर से ओवरनाइट 12 आवर्स ट्रैवल करने के बाद आई फाइनली रीच्ड मडगांव जंक्शन, और मैं फर्स्ट चेक इन कर लिया था एट द वेरी अर्ली मॉर्निंग इन माई आरम्बोल स्वीट लेक रिसोर्ट। अगर आपको डिटेल्स चाहिए रिसोर्ट का, सो आई विल अटैच एवरी डिटेल्स एंड फोन number and location in the description below. You can check it out. My resort was just by the side of the beach. तो वापस आते ही पहला काम जो मैंने किया was to book a ride, which is the renting a scooty. तो scooty rent करने से पहले you have to check everything, the stand, the brakes and everything of that scooty, that it is proper in proper condition or not. क्योंकि गोवा में ना बहुत चोरी होता है। कैसा चोरी होता है मैं आपको बता दूँ कि when you rent such scooties, after you go to return them, they will say कि आपने ये किया, आपने वो किया, and they will charge you extra. So just beware of all these frauds in Goa. And Goa जाने से पहले research करना is mandatory. Researching for your stay, for your foods, for your everything is a must. तो हम लोगों ने फिर जाते वक्त देख लिया sunrise. इमीडिएटली आफ्टर रेंटिंग द स्कूटी हम लोग बाहर निकल गए थे टू एक्सप्लोर द लोकल प्लेसेस एंड टू सी वेयर वी कैन गेट गुड फूड्स एंड ऑल। बट अनफॉर्चुनेटली सारे जो दुकान है वो 10 बजे से पहले नहीं खुलता, एंड वी वर जस्ट डैम हंग्री, सो वी रिटर्न बैक टू आवर रिजॉर्ट एंड ऑर्डर ब्रेकफास्ट फ्रॉम देयर ओनली। आलू के पराठा वॉज डैम टेस्टी। आई विल जस्ट से, मैंने बहुत सारे पंजाबी ढाबाज में आई हैड माई आलू पराठा, बट दिस वॉज द बेस्ट दैट आई फाउंड in Goa. Apart from aloo paratha, we have ordered chicken sandwich and some juice. Those were also very fresh and juicy. तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ एक मिरर चेक। दिस वॉज माई फर्स्ट आउटफिट विच आई वोर इन नॉर्थ गोवा आरम्बोल। देखो, अगर सच बताओ तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू गोवा, आई एम विजिटिंग गोवा, एंड सो आई हैड अ लेस अमाउंट ऑफ रिसर्च डन ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। तो सच बताओ, डोंट ट्राई टू बुक रिसोर्ट्स और होटल्स नियर आरम्बोल, बिकॉज इट्स अ मोर इंटीरियर काइंड ऑफ प्लेस इन गोवा. So better when you visit North Goa, try to book your resorts near Anjuna or Panjim beach. So here first we reached to the Anjuna beach, और यहाँ से the view of the beach is amazing. तो हम लोगों ने टॉप में चला गया था, ये जो रेस्टोरेंट है वहाँ के एकदम टॉप से ये बीच व्यू एंड सनसेट एंजॉय करते करते we had our lunch. Lunch में we have ordered fish fry, butter chicken with fried rice and naan. So this is the outer view of the shack that we had our lunch. Just beside that, there was the most famous shack in the Anjuna beach, which was the Cafe Antonio. एक बात तो ये है कि नॉर्थ गोवा इज़ वेरी क्राउडेड. एज यू कैन सी, ये टाइम जो था सनसेट का टाइम, this time is the best time when the people, you can enjoy the proper beach vibe in this Cafe Antonio. And also you can do the best thing
वाटर एक्टिविटी इज़ दैट द पैरासेलिंग यू कैन डू फ्रॉम दिस अंजुना बीच. यहाँ पे आपको चीप में मिल जाएगा. ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू मेक डू सम शॉपिंग देन यू कैन डू इट फ्रॉम दिस अंजुना बीच इटसेल्फ. रात को वी वेंट टू अनदर वायरल एंड ट्रेंडिंग फूड शैक विच इज़ द टमेटोज. दिस वॉज इन द कैंडोलिम बीच. और यहाँ का व्यू बस देखो, इट्स जस्ट अमेजिंग. यहाँ का मतलब ये जो शाम का व्यू होता है ना कैंडोलिम बीच में, आई जस्ट लव्ड इट. सो आई विजिटेड गोवा ड्यूरिंग द दिवाली टाइम्स एंड इट वॉज all around so much of enjoyment, fun, firecrackers and सब कुछ देखने को मिला and we enjoyed it totally. So here we booked a table and ordered french fries with some juice because खाने के लिए पेट में जगह नहीं था. Still हम लोगों को वो beach view enjoy करना था, so we had to take something or the other. ये देखो नेक्स्ट मॉर्निंग को किससे मुलाकात हो गया. इट्स अ वेरी क्यूट कैट. ये जो हम लोगों ने जो बाइक रेंट लिया था वहाँ नॉर्थ गोवा पे, उसी का पेट था ये. सो शी वॉज रोमिंग अराउंड एंड आई एम जस्ट अ कैट लवर एज यू ऑल नो. The next must visit place is the कैथेड्रल चर्च. ये जो चर्च है दिस इज़ द ओरिजिनल कैथेड्रल चर्च जो अंजुना बीच के जाने के रास्ते में ही पड़ते हैं. यू कैन गेट द लोकेशन ईजिली ऑन गूगल मैप. दिस चर्च इज़ अ वेरी पीसफुल प्लेस एंड इट्स अ हेरिटेज साइट इन गोवा. बट मेक श्योर टू वेयर ट्रेडिशनल ड्रेस और समथिंग वेरी like soothing, not shorts and all. So they will not allow you inside because it's a prayer spot and you have to have a proper dress code. When we visited Goa, the temperature was nearly 40 to 41 degrees Celsius. So जाते वक्त we were so tired. We had that some coconut water. And the next spot that we visited was the watchtower. ये जो view point है, this is the lighthouse which is very beside the fort of Goa. So you can get a beautiful view from this lighthouse top. The next must visit food corner was in Baga Beach, the Britos since 1965, where we visited to have the fresh lobster, crab and other seafoods. यहाँ पे बहुत सारे साइजेस का लॉबस्टर मिल जाएगा. They bring and show it to you that which lobster you want to have and different sizes has different price. So this time from Britos I have ordered their lobster and they gave a platter for that lobster with some herbed rice, some french fries, moong dal salad and many more. After that I ordered some crab meal. They give in a meal kind of thing only. With that they give this hammer to cut the claws of that crab. अब देखो मैं कितना कोशिश कर रही थी पर हो नहीं रहा था, हाथ स्लिप कर रहा था. So I was using two hands. Those who all know will know that I am a Bengali and I don't need all such stuffs to break a crab, bro. It's like I can do it by my own teeth itself. We are used to it. Come on. So it was a fancy kind of place. So I was not supposed to do that and eat in that kind of way.
So I used that hammer and I finally have broken a claw and I've tasted that. That was damn juicy and damn tasty. After our lunch in Brittos, we headed towards South Goa. And you know what's the main difference between North and South Goa? If you visit both the places, you can differentiate. North Goa is much more crowded and South Goa is a total kind of, peaceful kind of place where you can enjoy yourself and the whole vibe of Goa. South Goa is a very peaceful place because it's a more kind of a hilly region, and you will get that proper Goa beach vibes with a way more peace than North Goa. In South Goa, we booked the Hotel O Resort, which is just near the Benolim Beach. Benolim Beach is nearly 1 or 2 kilometers from this hotel, so we booked it nearby. But I will suggest you here also, if you come to South Goa, please try to book hotels near Palolem Beach or maybe Butterfly Beach, because those are the main spots from where you can easily go to Kola Beach and also visit different places. I mean, the Palolem Beach is the heartthrob of South Goa. So in South Goa, we rented another scooty, because North Goa का जो भी scooty था वो आपको वहाँ पे ही छोड़ के आना पड़ेगा. And then when you come to South Goa, you have to book a cab through their Goa Miles app. Don't use a taxi over there, it's very expensive, or any kind of other stuffs. Just download the Goa Miles app and you will get very reasonable priced cab, and it's very trustworthy. So here we reached the hotel, and after that only we just rushed to the Benolim Beach, which was nearby to our hotel. We totally enjoyed the vibe and that day. The next day, I was just decked up for visiting the Palolem Beach, which is the most famous place in South Goa. Before going there, we had our lunch in a Goan type restaurant over there, and this place was named as Sky Rooftop Cafe. I will also share the details, name and the place locations everywhere in the description below. You can just check it out in case you need one. They serve proper authentic Goan foods, and I liked the taste also very much. So here is a brief overview of the menu card that they have. You can pause and check it out.
was Goan thali, which had one rava fish fry, aloo and some salad, and also their fish curry, which is the proper Goan fish curry, and it tasted very awesome. It was light, succulent and juicy. And as a Bengali, I always search for fish, chicken or egg anywhere I visit or go. So this was the wholesome meal that I had that day. Now coming to the best part, which is we headed towards the Palolem beach, and here you can see the road, right? So ये जो रास्ता है ना, ये बहुत सुनसान है, and it's just from between the forest. ये जो दो पास जो है ना, ये जो two sides you can see, it's only forest and nothing else. So I will suggest you, if you go and visit to Palolem beach, and if you book your stay somewhere far away from that, please try to go in the early morning and return by till the sunset, because ये अगर अंधेरा हो जाएगा, it's very very risky over here. सबसे बड़ा risky part ये है कि of wild animals, you cannot predict from where they can come and attack on you because you are on a two-wheeler. सेकेंडली ये जो हाईवे है यहाँ पे एक भी मतलब यू हैव नो स्ट्रीट लैम्प्स, तो ये पूरा अंधेरा रहता है एंड यू गेट टू सी नथिंग बट ओनली द स्कूटी लाइट जो है हेडलाइट, इट विल बी ग्लोइंग एंड दैट्स इट. और ये जो हाईवे है थर्ड, इस पे रिस्की जो है, इवनिंग होते ही यहाँ पे बहुत सारा जो ट्रक वगैरह है, लॉरी एंड ट्रक्स, they start traveling and it's very risky because this road is completely turning kind of thing. So ये जो turning points है घूम घूम के जाएगा, तो यहाँ पे बहुत risky है if you are on a two-wheeler. South Goa is more like a hilly kind of area, as I said before. तो यहाँ के जो रास्ता है it's more in a sloping kind of way. तो you have to be very careful. If the one who is driving the scooty or bike is not a good driver, it's very risky. I will suggest don't go by car, bike or scooty. Then rent a car itself. That will be more safe because ये बहुत hilly region है and हाथ मतलब एक्सपर्ट होना चाहिए जो भी चला रहा है स्कूटी और बाइक. सो आफ्टर रीचिंग द पालोलेम बीच आई एंटर्ड मार्केट टू सी सम गोवन टाइप ड्रेस, बट इफ़ आई से ट्रूली मेरे को पसंद नहीं आया बिकॉज दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर कॉमन थिंग्स दैट यू विल गेट इन ऑनलाइन शॉप्स ऑल्सो. I think it was my fault that I didn't buy anything from North Goa because North Goa पे बहुत सारा अच्छे मार्केट्स थे एंड वहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटीज़ एंड वेराइटीज़ के ड्रेस वगैरह था, but I couldn't buy from there, so I missed that shopping part. So this is the Palolem beach. Just have a look on this. और ये जो दूरी में आप देख रहे हो, that side is the butterfly beach. ऐसे बीच मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा. दिस वॉज सो डैम ब्यूटिफुल. दो साइड से यू विल गेट अ हिल एंड बीच में से इट्स द बीच दैट इज़ गोइंग. It's amazing kind of thing. So after vibing in the Palolem beach, वहाँ पे we came out and had chicken momos from a food stall over there, and then we returned back to Arambol beach itself. तो ये देखो यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया कि we went to the in the time of Diwali. So यहाँ पे वो लोग firecrackers they were doing such things and we were watching it. It was looking amazing. We were getting that
होमली फीलिंग जब हम घर रहते हैं ना तो वहाँ पे वी बर्न फायर क्रैकर्स, सो वी वर जस्ट एन्जॉइंग दैट। गोवा में अगर आप जाओ तो ट्राई टू, इफ़ यू आर अ अल्कोहलिक पर्सन, ट्राई टू बाई द अल्कोहल फ्रॉम द प्रॉपर अल्कोहल स्टोर्स। आपको बहुत सारे वैराइटीज़ मिल जाएंगे। Unfortunately we couldn't taste alcohol because we had the group that we went by only had two drivers, that two scooty drivers, so we couldn't had that because drink and drive करना allowed नहीं है गोवा में, and गोवा पुलिस is very very strict about their tourists। शाम के टाइम पे गोवा का हाल इतना ख़राब हो चुका था, it was all day raining and drizzling, so we couldn't do any sort of water activities or any kind of things, so we decided to let's explore the some chocolate factory over here which is famous for their desserts। The must try items over here are the blueberry cheesecake and their hot pancake with chocolate sauce on it। अब देखो इतना बारिश हो रहा था that we couldn't explore anything from there and we had to buy a raincoat over there to still go to some places and go at least have our lunch and dinner। So the next morning we were about to return back to our places, so before that we thought of ठीक है चलो थोड़ा सनी है तो थोड़ा सा घूम के आते हैं, क्योंकि हम लोग का जो ट्रेन था वो रात में था। So we plan to visit the Salolim Dam, which is another famous tourist spot and must visit place in South Goa। This dam is so beautiful and so unique architecture that you will not get to see any kind of dam in whole India itself। Just look at this, I mean क्या बनाया है यार। The dam is in such a beautiful location that you can see hills at the very